अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम डीसी वर्ल्ड पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड दिस इज़ आवर पीसी टूर गाइड। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि जी पीसी आपने बना लिया है, मुकम्मल हो गया पीसी, इसका आप फ़ौरन से टूर गाइड करें। और काफ़ी अर्से से लोग हमें कह रहे थे बट देयर वाज जस्ट वन कंपोनेंट मिसिंग एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट था हमारा ग्राफिक्स कार्ड। और फाइनली हमारे हथे ग्राफिक्स कार्ड चढ़ गया है, और वो कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको साथ साथ हम बताएंगे। सो लेट्स बिगिन द टूर ऑफ आवर पीसी। फर्स्ट ऑफ जनाब, प्रोसेसर, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन बिटवीन पीसी बिल्डर्स और गेमिंग पीसी बिल्डर्स ख़ास तौर पे कि जी AMD Ryzen लेना चाहिए या Intel की सीरीज़ लेनी चाहिए। लॉट ऑफ टफ बैटल्स. So previously we had an i3-6100 जिसने हमें काफ़ी फेथफुली हमारा साथ दिया 3-4 साल तक. लेकिन जब मौका आया कि जी एक नई पीसी बिल्ड करें, सो आई थिंक डिसीजन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट वाज फॉर द Ryzen 5 3600. और क्योंकि कोविड के दिनों में इट्स अ कोविड बिल्ड, तो टेक द रेट्स विद अ बिट ऑफ सॉल्ट. आपको हम साथ साथ रेट्स भी बताते चलेंगे. दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ये हमें पड़ा था 32,000 रुपीज़ का. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर रेट्स दे वर गोइंग क्रेजी. कोई 36,000 बता रहा है, कोई 38,000 बता रहा है, कोई 40,000 बता रहा है. कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या रेट्स चल रहे हैं. सो ये तो बात थी रेट्स की. वी गॉट अ ग्रेट डील फॉर 32,000 रुपीज़ एंड वी वेंट फॉर द Ryzen 5. बाद में how is life with this processor? So this review is not just going to about what we have, but also how life is living with these components. Honestly speaking, before Ryzen AMD processors मैंने कभी कोई temps वगैरह खोल के नहीं देखा था. I never bothered about कि मेरे system temperature क्या चल रहा है क्या नहीं है. But with Ryzen, as soon as I installed it, because I read the forums or reviews and everybody was talking about कि जी Ryzen के temperatures बहुत high होते हैं, ये बहुत high temperatures के ऊपर operate करता है, this and that. So वो जिसे कहते हैं ना, that what should I call that little prick हमें भी थी कि यार हम देखें कि इसके क्या हैं. तो हमने वो इंस्टॉल किए software जिससे आप you could keep an eye on the temperatures, and yes, the Ryzen runs very hot, at least with us. There are people out there जो कि Ryzen को काफ़ी cool चला रहे हैं. They are undervolting, 100 चीज़ें कर रहे हैं. But as far as we are concerned, हमने सिर्फ इसकी एक सेटिंग को टर्न ऑफ किया है, इसकी ओवरक्लॉकिंग की. इसकी 2 ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स होती हैं. हमने बूस्ट क्लॉक को नहीं छोड़ा, सो इट स्टिल बूस्ट टू 4200 4 megahertz or 4.2 gigahertz. But there's another setting that we have played around with, और उससे इसके टेम्परेचर्स जो हैं काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं. एंड इट स्टेज विद इन दोज टेम्परेचर लिमिट्स. 95 डिग्रीज तक जाता है इसका टेम्परेचर, विच लॉट ऑफ पीपल से जी बहुत ज़्यादा है ये है वो, बट दैट इज़ द डिज़ाइन लिमिट ऑफ दिस प्रोसेसर. सो नो नीड टू वरी अबाउट. we are not fine liners. There are a lot of people who are fine liners, सारा दिन बैठ के tweaking करते रहते हैं, but then there's not going to be enough time for you to play and you're going to be tweaking all over the place. So just be cool about the processes के अंदर अपने checks लगे हुए हैं, and they are going to make sure that they're there. हाँ, अगर आपके temperatures बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और आपका thermal throttling हो रही है तो then you might look at other options. But हमारे पास stock cooler है, and with the stock cooler the Ryzen 5 3600 is doing absolutely fine. There are no issues with that. उसके बाद अगर जब motherboard की बात आती है, so I think this is one of the weakest things of our build. We've got a A320-S2H और ये हमें पड़ा भी थोड़ा महंगा था. ये 12,500 हज़ार का motherboard बिक रहा था, but since it's a COVID build और जितने भी ये टॉमाहॉक मैक्स वगैरह थे उस वक्त 28-29 हज़ार के मिल रहे थे, और वो थे भी रिफर्बिश्ड. पता नहीं लग रहा था रिफर्बिश्ड है क्या, कहाँ का माल है. सो वी थॉट कि रिस्क नहीं लेते, एक दफ़ा सस्ता मदरबोर्ड ले लेते हैं. और फिर खैर हमने इसके रिव्यूज़ देखना शुरू किए. Gigabyte A320-S2H के अंदर रिव्यूज़ आर प्रीटी गुड. और एक पर्टिकुलर रिव्यू जो हमने देखा जिसने हमें हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया, एंड दैट रिव्यू वाज दे वर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद एन X570, और उसके ऊपर उन्होंने T8020 Ti लगाया हुआ था. सो दैट मीन्स इट could go हेड ऑन विद दैट, ऑफ कोर्स विद इट्स लिमिटेशंस. इसकी जो रैम की लिमिटेशंस हैं, इसकी जो PCI 3 स्लॉट की लिमिटेशन है, बट दैट डोंट इफेक्ट द परफॉर्मेंस.
इशू तब हो सस्ते मदरबोर्ड का जब उसकी परफॉर्मेंस इशू हो, अगर उसके जो VRMs हैं वो हो रहे हों, अगर उसके हीट या टेम्परेचर्स के इशू हों. There are absolutely no problems with the A320-S2H. It's running fine. It's giving the same performance. So we are very happy with that. Yes, we got it for 15,000, which is a bit of premium. But क्या करें, the market is like this. तो उसको हमने चलाना था. At that point of time, when we got the processor and motherboard, we were running it with ASUS 1060 6GB, or it went really well. But recently we got our hands on the Palit 360 Ti Dual OC, which is a fantastic card. So far so good, and we got it for a price of 97,000 delivered to our home. So this is a card which is better than a 2080 Super. और आप मार्केट में जाके देख सकते हैं 2080 Supers कितने के मिल रहे हैं. In some games it goes as high as the 2080 Ti, but yes, it stays in between them. 2080 Ti और 2080 Super के दरमियान ये ऑपरेट करता है. And in RT performance, it's sometimes even better than the new AMD 6800 and the 6800XT series as well. So as far as ray tracing performance is concerned, we are very satisfied. So for entry level ray tracing, this is a very good standard. और हमने क्योंकि competitive gaming करनी है, हमने जब DCS की बात करते हैं, हमने अपनी वीडियोस बनानी है, we've got today screenshots. So हमारे पास जो 1080p है और इसके अंदर जो DLSS टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप उसको आप स्केल करके you can take it all the way to 4K. So the ray tracing performance and all that is amazing. और इसके कुछ रिव्यूज़ हम आपको साथ लेके भी आएंगे. But this is a system guide और सिस्टम टूर. तो अभी हमारे पास रिव्यूज़ नहीं है, बट वी हैव रिव्यू वीडियोज़ इन द मेकिंग, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर, DCS, साइबरपंक और जो विचर है, ये 4 गेम्स हम खेलते हैं, वो आपके लिए लेके आएंगे. सो दैट इज़ फैंटास्टिक. ऑलराइट जी, नेक्स्ट इज़ the screen. We had 24-inch 1080p 60 Hz स्क्रीन थी, और उसमें DCS या फ्लाइट सिमुलेशन का इतना कोई मज़ा नहीं आता था. So we upgraded to an ASUS 32-inch LED, which is the VG1B. It's primarily जो है इसका जो डिस्प्ले है वो 1080p है, but it's got a fantastic 165 Hz refresh rate. So amazing picture quality, and the size and the curve of the screen is amazing. एक दफ़ा जब we upgraded from the 27-inch we had the Samsung, तो हमें एक दफ़ा लगा कि यार हमने बहुत बड़ी स्क्रीन ले ली है, इसमें तो हमारी जो गर्दन है उसमें जो sway है of observing things, that would be too much, but the curve really helps out. So curve screens जो हैं, they are not जिसे कहते हैं ना overrated. They are definitely something to have, and we are having a great time with the system. Alright जी, as far as the RAM is concerned, RAM के अंदर हमने शुरू में we had that pretty much everybody's running it. Corsair की RAM थी Vengeance, we were running. लेकिन उसके बाद फिर जनाब हमने G.SKILL Trident Z मंगवा ली. This is 16GB 8GB की 2 किट्स हैं, and it's 3200 megahertz पे चलती है. The Ryzen 5 operates at the 3200 megahertz spot, so it's a sweet spot. इससे ऊपर रैम आप जितनी मर्जी ले जाएं, but that won't really be effective, and the 3200 megahertz is the really sweet spot. G.SKILL Trident Z, it's a solid RAM. It's a great looking RAM. It's one of the best you can buy out there. So we are very satisfied with that. Alright, now let's talk about the chassis. Of course, chassis is very important, and we have the NZXT H510 in white color, one of the most over the top and shoddy casings, but we are very happy with it. It actually looks very classy. It's got a really nice glass panel which gives a really nice look of the inside of the components. The cables, हमने अपनी तरफ से कोशिश किया cables अच्छे तरीके से manage करें, so that looks really nice as well, and that is something that you can then take on for on and on. अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर कहते हैं कि जी जो NZXT केसिंग्स हैं H510, इसके जनाब फ्रंट कैम फैंस नहीं हैं, इसके अंदर आप इसका जो एयर फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं है, बट द एयर फ्लो इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इसके अंदर ये नेगेटिव एयर फ्लो
जनरेट करता है एंड द टेम्परेचर्स रिमेन कूल। इसके आपको कई रिव्यूज़ यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। और ये जो एक हमारा ख्याल है कि जनाब ज़्यादा पंखे हों, तो ज़्यादा पंखे जो हैं दे आर नॉइजी एंड दे आर नॉट गारंटी दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ गुड एयर फ्लो for the system. Of course, NZXT, they've got some thinking minds over there and they've designed a good chassis and we are very happy with it. पावर सप्लाई इज़ समथिंग जिसके ऊपर जो है हमारे बहुत सारे साथी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने पावर सप्लाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बिकॉज चैसी एंड पावर सप्लाई आर टू थिंग्स जिनके ऊपर अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें यू कैन टेक इट अ लॉन्ग वे। सो वी हैव गॉट द XPG कोर रिएक्टर एंड इट्स 850 वाट गोल्ड एंड द XPG इज़ अ न्यू ब्रांड। और क्योंकि यू नो जो कोर्सेयर और जो दूसरे जो कूलर मास्टर वगैरह थे जस्ट रिपिंग पीपल ऑफ, दे वेरी एक्सपेंसिव। So XPG के हमने रिव्यूज़ देखे and we got this 850 gold for 25,000 rupees and it's in local warranty and all that stuff. It is running absolutely fine, no issues, not very noisy. एक चीज़ जो हमारी रह गई थी जो G.SKILL RAM है, the G.SKILL RAM we got for $100 Canadian. This was imported and also the ASUS 32 VG1B we got it for 62,000 rupees. तो रेट्स में आपको साथ साथ कर रहा हूँ। एट द एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कैलकुलेशन टू लेट ऑल ऑफ यू नो कि ये टोटल बिल्ड कितने की बनी। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हार्ड ड्राइव्स की तरफ। जो मेन हार्ड ड्राइव है हमारी वो 2 TB Seagate Barracuda हाइब्रिड है फॉर मैस स्टोरेज। दिस इज़ अ फैंटास्टिक ड्राइव। आपका जितना सारा एंटरटेनमेंट का जो डाटा है और इसके अलावा जो हम मूवी रिकॉर्डिंग है उसकी बड़ी रिकॉर्डिंग, सो यू कैन लिटरली फॉरगेट अबाउट स्पेस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। But when it comes down to games, when it comes down to simulators, जो Microsoft Flight Simulator है या DCS है, so we've got the 512GB Crucial MX500 SSD and we've also got the 256GB Samsung Evo NVMe going on for as well. So all variety total तकरीबन round about 2.75 GB हमारे terabytes हमारे पास memory है। The Seagate Barracuda I think जो भी market price चल रही थी we got it for that। क्रूशल हमने इंपोर्ट की है फॉर 70 Canadian dollars की। और जो सैमसंग ईवो है वी गॉट इट फ्रॉम सब वेब पेज, फेसबुक पेज, आई थिंक वी गॉट इट फॉर 10,000 रुपीज़। तो ये थोड़े से हमारे पुराने कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर any flight sim enthusiast, and that is our HOTAS, and we are very proud of our HOTAS, and that is the Thrustmaster T16000M. It's a fantastic little beast। और ये इन टाइम्स में जिन टाइम्स में ये रिकॉर्ड हो रहा है कोविड में और जब से माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर आया, HOTAS और फ्लाइट कंट्रोल्स पूरी दुनिया से बहुत शॉर्ट हो गए हैं। सो वी हैड दिस इम्पोर्टेड फॉर 25,000 रुपीज़ विच इज़ अ फैंटास्टिक प्राइस। द स्टिक जो इसकी है उसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो वही है जो कि सबसे एक्सपेंसिव और सबसे एलीट जो HOTAS है वॉथॉग उसका सिस्टम है। और इसके अलावा जो थ्रॉटल है वो एक स्लाइडिंग एक्शन थ्रॉटल है और इट्स गॉट्स अ नंबर ऑफ हैट्स एंड स्विचेस which is more than sufficient to run any flight simulator happily. The mic जिससे हम बात कर रहे हैं for any YouTube streamers, आपको पता है YouTube streamers के लिए it's pretty much standard to have a Blue Yeti, और हमारे पास भी Blue Yeti black mic है which we also had it imported for around $200 Australian dollars. So ये मैं आप लोगों को conversion rates के लिए डॉलर्स बता रहा हूँ। जहाँ Canadian डॉलर्स हैं वहाँ पे Canadian डॉलर्स है, जहाँ पे Australian dollars and Australian dollars. So that is a fantastic mic. You can look at the reviews online. Amazing, and the voice quality is very good as well. उसके अलावा as far as the mouse is concerned, I think it's one of the oldest components. Mouse जो है हमारे पास Steel Series Sensei है, got it like I think 7-8 years ago. अभी तक बेहतरीन चल रहा है. There's no need. बाकी तरह के माउस हैं बट you know इसके स्मूथ, इसके ऊपर हमारी हैंड की ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। And even being a very old mouse, I think it's running very well with us. For the headset, we've got the Turtle Beach PX4 wireless headset. Primarily we got it for our PlayStation 4, but it's running very well with the PC as well. It's a surround sound set और इसमें बड़ी ज़बरदस्त voice आती है. So if you have a digital output, तो this is one of the best sets out there. एक इसकी वीकनेस ये है क्योंकि पुराना है, इसके अंदर ब्लूटूथ स्टीरियो साउंड नहीं है। सो ब्लूटूथ इज़ जस्ट यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द माइक एंड द ऑडियो जो है इसमें ट्रांसमिटेड होती है वायरलेसली यूजिंग अ वाईफाई बेस सेट। सो दैट इज़ दैट। एंड लास्टली वी हैव गॉट अ वेरी ऑर्डिनरी कीबोर्ड। इट्स सम ब्लडी कीबोर्ड for the A4 Tech.
इससे पहले बीच में हमने वो मैकेनिकल कीबोर्ड लिया था, जिस तरह तमाम लोग मैकेनिकल कीबोर्ड्स ले रहे हैं, तो यू नो दैट वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डिडंट रियली सी यू नो दैट डिफरेंस, and you know we've just reverted back to our baseline keyboard. And as far as the speakers are concerned, they're really old set of Zoltrix 2.1 speakers which run well, don't cause too much of a problem. So yeah, that is that G. This is Phantom's PC guide that is used for the DCS World Pakistan channel. Finally our build is complete. Well, actually builds are never complete, there's always something going on, but as of January 2021, this is where we stand. We are very close to our goal of achieving 10,000 subscribers, और तकरीबन 9,700 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, और हमारी रीसेंट वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और हमें बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स हैव जॉइंड अस. तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. उम्मीद है ये पीसी टूर गाइड आप लोगों को पसंद आई होगी. डू लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो अबाउट आवर पीसी. This is Phantom signing off, and before I go I am going to leave you with a final list with the prices. उसको आप तसल्ली से देख सकते हैं. I'm just going to leave it here and let the video end. Take care.